हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ है द फेमस एमपीवी पहले था, अब थोड़ा सा एसयूवी टाइप के डिज़ाइन में आने लगी है, इनोवा हाई क्रॉस। सो एक पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज लॉन्चिंग हुई है यहाँ लखनऊ में एंड राइट नाउ आई एम इन सनी टोयोटा। सो देखते हैं कैसा लगा लोगों को और किस टाइप के कस्टमर आए थे, किनके पास ऑलरेडी कौन सी कार थी, कौन अपग्रेड करने का प्लान कर रहा है क्रिस्टा से, कौन अपग्रेड करने का प्लान कर रहा है अर्टिगा या और कोई कार से। तो वो आज चेक करते हैं। माइलेज काफ़ी अच्छी हो चुकी है, 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसमें मिल सकता है आपको, बिकॉज दिस इज़ द हाइब्रिड ऑप्शन। अब पेट्रोल में ही आती है ये कार एंड चेक करते हैं ओपिनियन। एंड इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, वो देखते हैं विथ ऑल आवर गेस्ट। मेरा नाम अविनाश सिंह है और मैं राठौर ट्रेवल्स से हूँ। और मेरा ट्रेवल्स का ही काम है। और जैसे ही मैंने सुना कि ये गाड़ी आ रही है, मैं सबसे पहले देखने आया और बुकिंग अमाउंट दे के जाऊँगा यहाँ पे। ओके, भैया के पास ऑलरेडी इनोवा क्रिस्टा ही है। इनोवा क्रिस्टा 7 क्रिस्टा है मेरे पास। 7 इनोवा क्रिस्टा है। हाँ, और टैक्सी का ही काम है मेरा। ओके, लोग यहाँ पे बैठते नहीं है टैक्सी नंबर में, लेकिन हम लोग वाइट प्लेट अथराइजेशन करा के चलाते हैं। वेरी नाइस। और आपने बुक करा दिया भैया ऐसे? हाँ, कैसी लगी आपको कार और कौन सी वेरिएंट आपने बुक कराई है? हमें तो देखिए बेस मॉडल चाहिए होता है। Okay. ज़्यादा हमें टॉप मॉडल या सेकंड टॉप की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ बेस मॉडल चाहिए, क्योंकि कस्टमर की नीड होती है कि वो जैसे नई नई गाड़ियाँ आती हैं, कस्टमर जो हमारे जो वीआईपी कस्टमर होते हैं, जो अपर मिडिल क्लास अपर क्लास, वो लोग नई गाड़ियों में बैठना पसंद करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो या बाहर के कस्टमर होते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको नई गाड़ी मिले। तो हम भी, हमारा ट्रेवल एजेंसी भी अपडेट तभी होगा जब हम नई गाड़ियाँ लेंगे। और बिल्कुल, टोयोटा जैसी ब्रांड आपको पता है, जो चीज़ लाती है वो मार्केट में बूम करने के लिए लाती है। नो डाउट नो डाउट। आपको अच्छी लगी ये कार? बहुत अच्छी लगी। नाइस। भैया अब ये पेट्रोल ऑप्शन में आ जाती है, एक हाइब्रिड ऑप्शन भी है, लेकिन आपने बेस मॉडल लिया तो बस पेट्रोल वाला लिया होगा। तो नहीं, हाइब्रिड 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 का बेस मॉडल लिया। वेरी नाइस। फिर तो भैया को फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक लग्जूरियस इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बहुत अच्छा कार एज अ प्रोडक्ट। नाइस वे, नाइस टू मीट यू। सो वी हैव विद अस मिस्टर अभिमन्यु। हेलो। और सर के पास ऑलरेडी इनोवा क्रिस्टा? मेरे पास क्रिस्टा भी है, एक्सयूवी 700 और अल्ट्रास है। वेरी नाइस। सो 3 कार हैं और अब इनोवा हाइक्रॉस देख लो आप, तो तीनों कार के पर्सपेक्टिव से आपने देखा होगा। हाँ, तो कैसी लग रही है ये कार? फर्स्ट ओपिनियन कैसा है इसके बारे फर्स्ट ओपिनियन गाड़ी बहुत अच्छी है, सुंदर बनाई इन्होंने, कंफर्टेबल है। एक दो मिसिंग फीचर जो टोयोटा में हमेशा रहते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा बहुत अच्छा नहीं है इनका, और वायरलेस चार्जर जो उन्होंने एक्सेसरीज का दिया है। उसके अलावा बाकी गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है। में? एक्सयूवी 700 में आपको एडास मिल जाता है, अब इसमें भी आ जाता है। आपकी कौन सी वेरिएंट है? एक 7L। एक 7L है। तो ऐसा नहीं लगा कि अब इसको लेके गलती कर दिया, इसको ले लेना चाहिए था? नहीं, वो रहेगी, इसको बुक करा दिया मैंने, वो रहेगी, क्योंकि उसको चलाने का मजा अलग है, ये अलग चीज़ है। दिस इज मोर लाइक अ वैन ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। टोयोटा इज अ ब्रांड इन इटसेल्फ और रिलायबिलिटी भी आपको साथ में मिल जाती है, जो हमेशा टेंशन फ्री रहने वाली है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू। तो राहुल भैया से ओपिनियन लेते हैं। हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस, गाड़ी को देख के कैसा लगा? गाड़ी अच्छी है. It's like it's a 7-seater. That is basically what we are looking for, a 7-seater car. Okay. And Innova ने अपने आप को upgrade किया है. But I think there are certain things which does not give a wow feeling. Apart from obviously certain things which are good, like in the back, in the middle row, the rest, the leg rest and everything is given is quite good. Otherwise, the plastics which they have used, and True, exactly. that does not give a very upmarket feeling. That's the only thing which I think is lacking. Rest of the things are fine, because I've checked the reviews on the YouTube also. So the same thing which I am finding right here. True. And a little cumbersome in getting the third row, and then Okay. I think it is more of a for the child only. Correct, seats. correct. Yeah. However, we tried sitting at the back seat, the last seat. It was kind of okayish, better than other rivals. Yes. So, it is. talking about the rivals, are you looking for any other options apart from this car? Well, I would check out Jeep Meridian as well. Okay. And I don't think there are too many options in 7-seater. I'm already owning Tata Harrier, so I don't want to go for the Safari. Okay. Makes sense. So that's the only, I think, you have limited options in 7-seater car. That's how it is. So right now you have Tata Harrier. Yes. And now you are planning to switch or upgrade to a new car. Yes. So the options are Innova Hycross or Jeep Meridian. Jeep Meridian. That's Not looking for XUV 700. 700. I'm not very keen for 700, to be honest. And in fact, my family is also not very happy with 700. So
Yeah. Any particular reason? Maybe because of Mahindra. Got it. So still people are not very, I would say, very much confident about Tata and Mahindra as No, a Tata I am product. confident. You're Tata okay with is, Tata? yeah. Tata I am riding for the last 3.5 years, and Okay. Harrier is definitely a perfect car. And apart from few glitches in terms of their services, otherwise it's a very good car. No Nicely doubt. build quality is awesome, and it can beat any other car. No doubt. And the riding quality is also very good. True. And it's awesome car. थैंक यू सो मच सर. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर फीडबैक. हम लोग अभी एक वीडियो शूट कर रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं कि लोगों को ये कार कैसी लगती है, कैसी लग रही है, और बहुत अटेंशन मिल रहा है. तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा लगा आपको ये कार? कार देखने में तो अच्छी लग रही है. जी अंकल. और आप ऑलरेडी कौन सी कार ओन करते हो? सफारी. सफारी. सफारी स्टॉर्म या नई वाली सफारी? स्टॉर्म नई वाली. नहीं, पुरानी वाली सफारी स्टॉर्म. अंकल भी सफारी स्टॉर्म ओनर है. हमारे पास भी अंकल सफारी स्टॉर्म ही है. बहुत ही अच्छी कार है. तो अभी आप प्लान कर रहे हो क्या कोई अपग्रेड का, चेंज करने का गाड़ी? इसी के प्लान कर रहा हूँ. अच्छा, तो ये कैसी लगी? गाड़ी तो ठीक लग रही है. बुकिंग आपने करा दिया है? अभी नहीं, अभी तो बुकिंग इसकी अब गाड़ी देखी है आज. जी. ये कब तक मिलेगी? जनवरी एंड से बोल रहे हैं कि जनवरी एंड से मिलना शुरू हो जाएगा. ऑलरेडी 450 लोग इस शोरूम पे बुकिंग करा दिए हैं. इसकी हाँ. शोरूम पे? जी जी. तब तो मिले नहीं पाएगी 6 थोड़ा महीने के अंदर. वेटिंग बढ़ जाएगा, तो जल्दी बुक कराने पे चांसेस रहता है कि जल्दी मिल जाए. लोग 400 तो बहुत हो गए जी. और लोगों का अटेंशन बहुत मिल रहा है. इसका एवरेज क्या है? 21.1 क्लेम कर रहे हैं हाइब्रिड में. अच्छा. और पेट्रोल ऑप्शन आ जा रही है पेट्रोल में, और एक पेट्रोल विथ हाइब्रिड आ रही है. दो टाइप के इंजन ऑप्शन है. अच्छा. जो पेट्रोल ऑप्शन है उसमें 16-17 तक का माइलेज मिलेगा. और जो पेट्रोल हाइब्रिड है उसमें बैटरी भी पावर करता है इसको. तो 21 to 22 का माइलेज मिल जाएगा. कभी कभी ईवी मोड में चलेगी बैटरी वाले से पावर लेके, और कभी कभी पेट्रोल और ईवी दोनों कंबाइन करके कभी कभी फुल्ली पेट्रोल पे ही चलेगी. तो माइलेज 21-22 मैक्सिमम क्लेम कर रहे ये हैं. भी तो ऑप्शन होगा ना कि फुल्ली पेट्रोल पे चलेगी या उस पे चलेगी? जी, ऑप्शन है अंदर. ईवी मोड स्विच कर सकते हो आप. अच्छा. लेकिन जब बैटरी डिप्लीट कर जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगी. स्विच कर लेगी पेट्रोल पे. जी. तो पेट्रोल पे एवरेज क्या है? पेट्रोल पे 16 का क्लेम कर रहे हैं. रियल लाइफ में मेरे को लगता है हाइब्रिड वाले में सिटी में 15-16 मिल जाएगी. जी अंकल. और उसमें मिलेगा वही 14-15. हाँ, उसमें 12-13-14 ऐसे. थैंक यू अंकल. सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. व्हाट्स योर नेम? I'm Colonel Dinesh Srivastava, retired, and I'm a helicopter pilot Very nice. serving in Government of Uttar Pradesh. Right. Very nice. And ma'am, what's your I'm name? Mrs. Srivastava. Nice to meet you, ma'am. Nice to meet you, sir. So what's your experience about the car? Did you like it? Yeah, well, we were quite excited. You know, we've been waiting for it for quite some time. We haven't seen a lot of vehicles, and we thought that we'll pend our decision until this car comes and wait for it to, you know, have a first-hand look on this. Looks good. Looks quite handsome or beautiful, whatever you will call it. True. And it's a big car. I've seen the features. I've compared the various versions that you have, VX and ZX and ZXO, and the just only petrol models also. What I feel is, probably they could have included the top features in the second top also. Okay. I'm sure that's not going to be working out very cheap as compared to top model. No doubt. Probably they should have given a few more, at least the security features, Correct. which they have included in the top model, that is ZXO. So, after all, it's not a very cheap car if you see the Indian market. So, in that kind of a budget, at least give at least top two models of yours. You should have given at least, you know, more as far as the security is concerned. So they should have included that. That is one. Second thing which I feel is they have deprived the lower models of 8-seater. Correct. The middle seats, probably they could have done it with a bench seat rather than, you know, captain seats, bucket seats. Correct. Yeah, that is one. वॉल्यूम कम करो यार, कॉपीराइट आ जाएगा.
Sorry, sir. But otherwise, I think overall looks to be good. And as I said initially, a few more features like the your tailgate. True. That could have been powered for all the versions. It's not a cheap car. You see, even Correct. a car like MG Hector. I shouldn't be naming the other cars. Correct. But then yes, they are giving all these features, No doubt. and a car which is costing that much, this much. So probably these features should have been It doesn't have included. a cool box too, so that is another thing. Cool glove box. Yeah. Yeah, correct. That is also They haven't you know, included must- that. And wireless charging is not there. That was another thing, you know, whichever I think so. Yeah. Most of the new cars are having this. They should not have given that as an accessory. Rather, it should have been embedded in the car. Embedded. Exactly. Into it. Very true. And you see, ladies, the wife, she's going to be sitting on the co-driver seat, right? Correct. And it She doesn't requires open that side. no. She requires more of electrically operated seat than doubt, me. no doubt. I can handle it manually also, but she requires more soft and electrically operated seat. They could have included that also, electrically operated seat for the Your- lady. correct. Utna respect to hona chahiye. I think we have so much of respect in the army, as well as the whole of the nation respects all the Indian women. True. No, and So another itna to dena drawback chahiye. was, that the box which they have given in the center, the storage box, it just opens on the driver's seat side. Correct. It doesn't open on the other side. It opens sidewise. Yeah, it's उसको open cool कर sideways. देते, air cool to कर देते कम से कम. The person who's sitting, generally it's a driver or somebody who's driving would not operate that much. Correct. So it's the person who's on the co-driver's seat is going to operate more, to use whatever. Another with related to this box only, where it also works as an armrest, right? Correct. For the driver, for changing the gears, Yeah. right? So like in my car, the present car which I have, the top portion, the cover of that is sliding. Correct. It can move up slightly, maybe 3 to 4 inches. You can slide it back also. So when you slide it forward little, you can rest your arm on this and operate your automatic gear Correct. lever. Whereas in this case, since they have shifted the gear right up like this ahead, and it's on an inclined surface, so the hand is not reaching the gear. Correct. For long drives, you see, so you have. And did you like the position of the gearbox, gear levers? This is the only car which I am seeing which is having this inclined gearbox, gear lever as such. Otherwise, normally they have it in a, In the center console. Yeah, center bottom console. So, Probably a test drive will give a better test idea. drive, of course, you're not going to give us a test drive right now. The car has just come for a few hours here, so we'll see. when it So comes, which variant how are you comfortable- planning for? Like which variant are you going to book? I was looking for the top variant, but then again, I will. The Toyota people, the Arabs, they should think about costing it well. Probably if they cost it somewhere between 30 to 32 on-road price, probably it will sell like hotcakes. No doubt. Yeah. No doubt. So they must cash on volume rather than True. escalating the price. And any other drawback in the second row or the third row? Second row, as I said, one is the bench seat. They could have included in the lower models. They don't have. They've got only captain seats. Otherwise, the leg spacing is good. Then they've got given you the support to the calf muscle in the center one. That's probably electrically operated. So Correct. that's one good thing that they thought of. They could have probably added a tray behind the driver's seat and the Correct. co-pilot. Like they had in the previous co-driver's seat. variant version of the Innova Krista. Exactly. Quite a few cars are having this, as a factory design as such. So probably that they could have done. Otherwise, the space is, I think, good. It looks good. So, ma'am, And maybe rails on top. yeah, That would have 100%. Even an we were added missing it. attraction probably. That would have looked good as well. Correct. Yeah, and it would have given them a little more height to look at. Exactly. It may not be useful as such, but at least it gives you a good look. But with respect It's a to taller SUV vehicle. standards, because they are calling it an SUV, not an MPV. Okay. So, with respect to that, side rails could have been added, could have Yes, given a better exactly, view. exactly. But I know they are going to sell it as an accessory, so you can add it. Okay, so that's the marketing strategy. So, well,
No, but then that's adding to the cost when you're already making it such an expensive car. So these basic things. That's what I said. there, When you are it will- keeping the cost already very high, so these things should be given right at the first stage, and not just at the top model, as I said. Maybe lower first 2 or 3 models also. So which is your previous car right now which you are I driving? have an automatic XUV 500 W10, which I bought about 5 years ago. So now I wish to change my car basically. So are you happy with that car? Oh, I had a wonderful time with that car. Okay. I really enjoyed. That was the top version at that time, and I was switching over from manual to automatic. So once I got used to the automatic thing in a couple of days, it's been really comfortable. Are you still looking for XUV 700 as a rival or an option? 700, yes, feature-wise it looks very nice. The only thing, And even cost-wise too, it looks it's Very attractively very priced. attractive. Cost-wise, the kind I of think it's features quite what they're attractively offering, priced. and the experience that we've already had with them has We've been owned a wonderful. It's similar just car. that we wish to change over to that Only thing, only. they don't have a space behind. The third row is really like a boot space only, as you call it, literal sense. So you can't even place an airbag there. So that's one problem. In this one with all the seats up, even then you have enough boot space. Yes, So that's good enough. That is That's good enough. You can place 2 suitcases and a couple of airbags. So that's space-wise is pretty good. I think it's longer than the original earlier Innova Crest, right? it's longer than that. So space-wise is really nice. There's no doubt. Plastic qualities, did you feel that? Did you find it good? Yes, on the looks good, but I think the rear may corner portion is weak. I just knocked it and checked. Okay. Because I felt it is plasticish. Okay. So I don't want to get into that. Innova, Toyota people will beat me up. So one last point which sir would like to add. Okay. Sir, please go ahead. Yeah, you see, I'm an army retired officer. So on behalf of the defense fraternity, I would rather request the Toyota people to include a few versions of this, or maybe all of them, in the CSD canteen also, because they will attract a whole lot of customers from the defense. And why deprive them? We are doing such a wonderful job. No doubt. Our boys, just now you saw them, bashing the Chinese at Tawang. So, and earlier at Galwan. So why do you deprive them? 100%. I need think the this is the best, payback, rather regard that you can show to them. 100%. Included into the CSD. I think, I hope the Toyota people will, consider this. Definitely, sir. We'll definitely tag them. We'll tag them in the Thank you description, so and much. I hope they'll add in Thank you CSD so as well. much. Yeah, we hope. We look forward to that. Thanks a lot. Thank you. थैंक यू मैम. सो अभी मैं खड़ा हूँ सार्थक भाई के साथ, और इनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है ऑफ द इनोवा हाईक्रॉस, ये हम जानते हैं. कैसी लगी आपको इनोवा हाईक्रॉस भैया? फ्रंट से तो लुक काफ़ी अच्छा कर दिया, काफ़ी मस्कुलर है. बैक थोड़ा इम्प्रूव कर सकते थे. इंडियंस को जो कि अभी तक टोयोटा में सनरूफ नहीं मिलती थी, तो उसको ऐड करके एक नए सेगमेंट को टच करने का इन लोगों ने और वो लिया है. और बाकी इंटीरियर्स तो काफ़ी अपग्रेड कर दिए हैं. अभी तक एक इनोवा का ट्रेंड चल रहा था जो कि थोड़ी पुरानी टाइप की लगती थी, कि मतलब यूथ जो है वो नहीं चाहता था. पेरेंट्स हमेशा चाहते थे टोयोटा बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड रॉयबिलिटी. तो अब एक थोड़ा यूथ भी जो है इसमें इंटरेस्ट लेगा इस कार में. करेक्ट. और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नेगेटिव लगी इस कार के बारे में, कि अच्छा हो सकता था या फिर अच्छा नहीं है? तो मैंने जो 5 मिनट में देखा है, सबसे पहले जो फ्रंट रो के नीचे बैटरी लगाई है इन्होंने, इसकी प्लेसमेंट कहीं और कर सकते थे. अब जैसे मैं 6 फीट 1 इंच हूँ, तो मेरा सिर जो है वो ऊपर टच करता है. करेक्ट. तो एक ये चैलेंज लगा. दूसरा कि पैर नीचे नहीं जा पाते हैं सीट के, अक्सर लोग जो है थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी. अभी तो 2 ही रो हम लोग ने टेस्ट करी, बट जब थर्ड रो में कोई बैठा होगा तो अक्सर क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा रूम मिल जाता है. करेक्ट. तो एक ये है. बाकी अभी ड्राइव पे तो अभी मैंने नहीं चलाई है, तो सस्पेंशन और उसमें क्या इन्होंने करा है, क्योंकि बॉडी वेट लाइट करा है. करेक्ट. तो उससे ड्राइव में क्या कमी रहेगी, क्या इम्प्रूवमेंट रहेगी, ये उसके बाद ही पता चल पाएगा. पहले ये लैडर ऑन फ्रेम आता था, अभी मोनोकोक आ रहा है, फ्रंट व्हील ड्राइव आ रहा है. फ्रंट व्हील ड्राइव आ रहा है. ड्राइव के बाद बहुत कुछ पता चलेगा. ड्राइव के बाद बहुत कुछ पता चलेगा. अभी आप कौन से कार ओन करते हो और ये प्लान कर रहे हो लेने का? प्लान तो है मेरा काफ़ी टाइम से. इससे पहले ही इनोवा भी मैं देखने आया था, बट किसी वजह से वो फाइनल नहीं हो पाई थी.
अभी मैं लैंड रोवर डिफेंडर चला रहा हूँ पर्सनली, और बाकी हैं और भी कार्स हैं। तो इनोवा एक फैमिली कार के लिए लॉन्ग ट्रिप के लिए मैंने सोची थी। लास्ट टाइम इनोवा लेने आया था तो मैं एमजी हेक्टर नहीं ग्लॉस्टर पे सोच रहा था, बट अब इनोवा का फिर नया मॉडल आना था तो इस वजह से हम लोग रुक गए कि XUV 700 सफारी या जीप मेरिडियन, इन तीनों नहीं, इन ऑप्शन सब से तो काफी ऊपर निकल No गई है doubt. जो इस प्राइस ब्रैकेट में है। बट अब ये देखना है कि इसकी प्राइसिंग अगर Pricing कैसी है? जो टेंटेटिव आ रहा है 40-45 लाख तो वो ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस 20 से 25 लाख के सेगमेंट में मेरे हिसाब से अभी भी XUV 700 जो है मार्केट रूलर रहेगी, और ये जो है एक नया सेगमेंट क्रिएट कर देगी। अभी जैसे तमाम पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं, दे प्रेफर इनोवा बिकॉज ऑफ द बकेट सीट्स। मैं हूँ, मैंने आज तक MG ग्लॉस्टर और इस पे ट्रस्ट ही नहीं आ पा रहा उस ब्रांड के ऊपर कि आप ले लो फंस जाओ कहीं पर। टोयोटा में क्या एक ब्रांड रिलायबिलिटी है कि आप जो है अच्छी गाड़ी में हो, अच्छे सेफ ट्रैवल कर रहे हो। सही बात, जब भी आप ऑन करोगे वो वैसे ही हाँ perform कि करने वैसे परफॉर्म करेगी वो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you. सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। नाइस मीटिंग यू। सेम है।